Good morning class. I welcome to you all RTMPS online classes. Today in science we will continue our chapter 10 measurement. In this chapter we already discussed three types of measurement, that is measurement of length, measurement of mass and measurement of capacity. Today we will discuss two important topics, that is measurement of temperature and measurement of time. We will discuss these two topics one by one. Let's start with measurement of temperature. What is the measurement of temperature? It tells us how hot or cold an object is. कोई भी object कितना hot है या cold है. Measurement of temperature tells us. Suppose you fall sick. हम जब बीमार पड़ जाते हैं और आप बीमार पड़ते हो तो what our mother do first? They bring the thermometer. आप क्या करती हैं? They bring the thermometer and check the temperature of our body. हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करती है. दैट टेल्स and with the help of the thermometer. किससे? थर्मोमीटर से. And that tells कि how we don't have a fever, we have a fever or not, हमें फीवर है कि नहीं. And that also tells us कि we how हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना, how cold we are and how hot we are from inside. Okay, this is the temperature and we measure temperature with the help of the thermometer. Thermometer is also known as a clinical thermometer. Clinical thermometer हम इसे क्यों कहते हैं? Because we have a mercury in the thermometer, inside the thermometer, that check the temperature of our body. वो mercury rise होती है if we have a high temperature, if we have a high fever, if our body have a high, ज़्यादा गर्म होती है तो हम लोग mercury rise होती है. If we don't have a fever तो mercury वो normal में ही रहती है. तो that tells the fever tell us about thermometer, जो हमें thermometer बताते हैं. Now there are two, centigrade scale and the Fahrenheit scale. There's a centigrade scale is a below the boiling point of for water. सेंटीग्रेड क्या होता है? वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो बताता है कि सेंटीग्रेड मीन्स हॉट थिंग. एंड फ़ारेनहाइट बिटवीन दिस, मतलब बहुत ज़्यादा जब ठंडा होता है चीज़ें, ठीक है, टेल्स इन फ़ारेनहाइट. एंड इट हैव अ डिग्री, symbol is degree C and degree F, centigrade and Fahrenheit. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, हमारे नॉर्मल बॉडी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल होता है. और 98.6 फ़ारेनहाइट. अगर 98.6 के ऊपर है, सपोज वी हैव अ 100, तो वी हैव फीवर, हमें 100 पे फीवर होता है. सपोज द thermometer show that our body temperature is 100 Fahrenheit. It means we have a fever, हमें फीवर है. Okay, in the same way, अगर बॉडी में हमारी नॉर्मल है, बिलो द 98.6 तो हमारी बॉडी नॉर्मल है, ठीक है, एंड 98.6 भी है तो हमारी बॉडी में फीवर नहीं है. दिस इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. नाउ वी मूव फर्दर एंड डिस्कस टॉपिक मेजरमेंट ऑफ टाइम. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? मेजरमेंट ऑफ टाइम. Help us to measure time in hours, minutes and seconds. Measurement of time क्या करता है? हमें hours बताता है, minutes and seconds. What is the relation between these three things? As you all know, 60 second is equal to 1 minute. 60 second होते हैं तो 1 minute होता है. 60 minutes होते हैं तो 1 hour होता है. Then 24 hours is equal to 1 day and 365 days is equal to 1 year. Sometimes it is a 366 year when there is a leap year. So 365 days now 1 year. How we can measure the time? With the help of the watch, clock. Nowadays we have a digital watch also, and nowadays we have a mobile phones. The best way to see the time, that is a mobile. आज का best technology क्या है हमारे time देखने का? मोबाइल, ठीक है. तो हमारे पास these are the things that we use to watch the time. This is a clock, and the clock have a 3 hands, hour hand, minute hand and a second hand. ठीक है. आर एंड शो द आवर्स एंड इट इज स्मॉलर इन साइज, वो स्मॉल होती है. मिनट हैंड इज बिगर देन आर हैंड. मिनट हैंड क्या होती है? वो आर हैंड से बड़ी होती है. एंड सेकेंड हैंड इज बिगर, सेकेंड हैंड भी बिगर होती है. दिस इज आर हैंड मीन्स द टाइम इज इन दिस क्लॉक इज 10 o'clock. How much? 10 hour 10 minutes and 35 seconds. And clock have our 12 hours of numbers. 12 numbers होते हैं, starting from it there. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We have a 24 hours. तो clock क्या करते हैं कि time भी बताती है, ठीक है. When we have a day, we started a day at the midnight 12. हमारी जब day कब से start होता है? midnight 12 से.
and 12 midnight जब रात में 12 midnight होती है, that is 12 AM to 12 PM, ठीक है. मॉर्निंग में जब 12 बजते हैं that counts to 12 PM and it goes till 12 AM and then makes a one day. तब वो one day complete होता है and our clock show the 12 hours in a hand, ठीक है. This is all about today कि we studied about the measurement of temperature and measurement of time. And I hope you understood the chapter. Read the chapter at your home. This chapter is finished today, so please read the whole chapter again. If you have any doubts, write in the comment section. Thank you, class.